What is the primary function of the Windows taskbar? Which option is the right answer? Windows taskbar रो primary function निम्नोक्त मध्यरु केउटी? Windows taskbar कौन है परिबो? Primary function कथा पचार जाइछि. It means Windows taskbar रो कामो कोन? आमे जानि चंती taskbar कोन? आपनकर जो Windows रहिछि. ओके, Windows रो बॉटम रे जो बार टी थाए दैट इज होछि taskbar. Windows रो बॉटम रे ओके जो बार टी रहउछि दैट इज taskbar एवं एहारो कामो हेउछि टू डिस्प्ले रनिंग एप्लीकेशंस. ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर. ठीक अछि, समस्त चूज करछंती. विंडोज टास्कबार रो प्राइमरी काम हेउछि डिस्प्ले करिवो रनिंग एप्लीकेशन को. लाइक आपण माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेल को यूज करूछंती, माइक्रोसॉफ्ट रो वर्ड यूज करूछंती, जहां भी आपण एप्लीकेशन यूज करंती ताहा जते बेले रन करे दैट इज शो हेबो विंडोज टास्कबार रे. ओके, क्लियरली बुझियला. एठी आपनकर स्टार्ट बटन थाए, देन ए पार्ट यू कहजे नोटिफिकेशन एरिया. क्लियरली बुझियला. देन एटा विंडोज रो ऑलवेज कोन रहबो ना बाय डिफॉल्ट बॉटम रे रहबो, बट आपण चाहिले एटा को शिफ्ट करई परिबे. ठीक अछि, शिफ्ट करई परिबे, बट एटा बाय डिफॉल्ट विंडोज रो बॉटम रे थाए. क्लियरली बुझियला. नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 2. Which Windows key combination is used to switch between open windows? ट्राई करंतु. Which Windows key combination को व्यवहार करा जाए फॉर शॉर्टकट switch between open windows? Switch between open windows means what? Like देखंतु एठी आपण Google Chrome ओपन करछंती, एटा होची Google Chrome रो विंडो. देन आउ गोटे विंडो ओपन करा दैछि दैट इज Adobe Photoshop. ओके, इट मींस Google Chrome रो Adobe Photoshop को आसीबा और Adobe Photoshop रो Google Chrome को जिबा. दैट इज माउस रो पॉइंटर जरिया रे करि परिबा, नो डाउट. बट से एठी प्रश्न पचारुछि केउ विंडोज की कॉम्बिनेशन माने केउ शॉर्टकट की जरिया रे आपण स्विच करि परिबे. सेति भाई ऑप्शन बी ऑल्ट सहित टैब को प्रेस करा जाए. ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर. ओके, ऑल्ट की प्लस टैब की इज योर राइट आंसर. ओके, क्लियरली बुझियला. ऑल्ट की सहित जदि आपण टैब की को प्रेस करिवे ताले स्विच करि परिबे दुईटा विंडो मध्य रे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द नेम ऑफ द विंडोज यूटिलिटी यूज्ड टू मैनेज डिस्क स्पेस एंड रिमूव टेम्पोररी फाइल्स? निम्नोक्त मध्यरु केउ विंडोज यूटिलिटी को व्यवहार करा जाए कोथि पई? डिस्क रो स्पेस को मैनेज करिवा सहित आपण को कंप्यूटर रे जदी किछि टेम्पोररी फाइल्स अछि सेटा को रिमूव करिवा पई केउ विंडोज यूटिलिटी को व्यवहार करा जाए? दैट इज ऑप्शन ए हबो राइट आंसर. डिस्क क्लीन ऑफ. डिस्क क्लीन ऑफ हेउचे एक विंडोज यूटिलिटी दैट इज यूज्ड फॉर मैनेज डिस्क स्पेस एंड remove temporary files. Option A हेबो यार राइट आंसर. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. The number of pixels displayed on a screen is known as the screen रो कोन कहै जिवो? गोटे स्क्रीन रे थिबा नंबर ऑफ पिक्सेल्स को कोन कहै जाय? स्क्रीन रो रिजोल्यूशन कहै जाय. स्क्रीन रो रिजोल्यूशन कहै जिवो. ठीक अछि. जेमिति 240 रो गोटे पिक्सल होछि स्क्रीन रो रिजोल्यूशन, सेमिति 360 रो होछि गोटे पिक्सल होछि रिजोल्यूशन, 720 होछि 720 पिक्सल गोटे स्क्रीन रिजोल्यूशन हे परिबो, सेमिति 1080 पिक्सल गोटे हे परिबो, एंड लोएस्ट 144 रो पिक्सल हे परिबो. एटा आपण देखिथिबे जतेले आपण YouTube को यूज करंती. ठीक अछि. सेटिंग जाई कि वीडियो रे जतेले क्वालिटी ऊपर आपण काम करंती दैट इज पिक्सल कहै जिवो, एवं एही पिक्सल जतेले स्क्रीन रे डिस्प्ले हबो दैट इज रिजोल्यूशन कहै जिवो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. What is the name of the Windows built-in antivirus software? कहंतु. Windows रो built-in antivirus software होची Windows Defender. ठीक अछि. इट मींस जते बेले आपण कंप्यूटर को किनंती एही सॉफ्टवेयर टी कोन थाए आपनकर ऑपरेटिंग सिस्टम रे इंस्टॉल हेकी थाए. दैट इज होची Windows Defender. क्लियरली बुझियला. Windows Defender होची built-in antivirus एवं एही Windows Defender गोटे सिस्टम सॉफ्टवेयर रो पार्ट जहाको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मध्य कहै जाय. एंटीवायरस रो काम कोन? एंटीवायरस रो काम होची विंडोज रो फाइल को प्रोटेक्ट करेबो का कबळ वायरस कबळ. ठीक अछि. वायरस को प्रोटेक्ट करिवा इट मींस वायरस को डिटेक्ट करिवा एवं विंडोज रो फाइल को प्रोटेक्ट करेबा काम होउची विंडोज डिफेंडर रो. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पेरिफेरल्स आर कोन हबो कोंतु व्हाट इज पेरिफेरल्स ट्राई करिवा व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर व्हाट इज पेरिफेरल्स पेरिफेरल्स कहा को कहा जाय पेरिफेरल्स होची इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को पेरिफेरल्स कहा जाय मन रखंतु इनपुट डिवाइस लाइक आपनकर कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ही परिबो और प्रिंटर ही परिबो देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक आपण पेन ड्राइव यूज करंती दैट इज ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्लियरली बुझियला तो ये समस्त गोटे गोटे पेरिफेरल्स अटंती तो पेरिफेरल्स कोन हिजबो इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी डिवाइस को पेरिफेरल्स कहा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एमएस वर्ड फीचर allows you to automatically format a document with a pre-designed layout प्रश्न बुझंतु प्रश्न कहूची माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रो केउ फीचर रे आपण ऑटोमेटिकली गोटे फॉर्मेट करि परिबे कहा को एक डॉक्यूमेंट को प्री डिजाइन्ड लेआउट रे से फीचर को कहा जबो टेम्पलेट्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर से फीचर को कोन कहा जाय टेम्पलेट्स कहा जाय मन रखंतु से फीचर को कहा जाय टेम्पलेट्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर हाउ डू यू इंसर्ट ए पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे पेज ब्रेक करिवा पई केउ शॉर्टकट की को यूज करा जाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे पेज को ब्रेक करिवा पई केउ शॉर्टकट की को यूज करा जाय ऑप्शन सी हो इज राइट आंसर कंट्रोल प्लस एंटर दैट इज यूज्ड फॉर पेज ब्रेक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे पेज को ब्रेक करिया पई कंट्रोल सहित एंटर को यूज करा जाय मन रखंतु आपनकर प्रश्न एमिति ही आसीबो शॉर्टकट रिलेटेड एब्रिविएशन रिलेटेड ठीक अछि दैट्स व्हाई आपण भलो भाबरे प्रैक्टिस करंतु व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक चेंजेस फीचर इन एमएस वर्ड वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रो गोटे फीचर रहिछि और वी कैन से सिंपली गोटे ऑप्शन रहिछि कोन सही ऑप्शन ट्रैक चेंजेस ए ट्रैक चेंजेस ऑप्शन रो काम कोन कोथि पय व्यवहार करा जाय सिंपली बुझंतु ट्रैक चेंजेस को यूज करा जाय टू कोलैबोरेट विथ अदर्स टू कोलैबोरेट विथ अदर्स मींस व्हाट लाइक देखंतु आपण गोटे डॉक्यूमेंट रे काम करूचंती और आपण गोटे डॉक्यूमेंट क्रिएट करिसंती बट आपण जेते बेले ट्रैक चेंज को एक्सेस दउचंती इट मींस अन्य जने यूजर सेथिरे जदी किछि एडिट करिछि एडिट माने कोन लाइक कोन से को सेंटेंस को से रिमूव करिछि किछि न्यू सेंटेंस ऐड करिछि एनीथिंग ओके सेही एडिट को आपण डिलीटेशन जरिया रे ट्रैक करि परिबे इट मींस मु क्रिएट करिथिबा डॉक्यूमेंट टी मु जेते बेले अन्य जन को एक्सेस दउछि सेही यूजर जहां भी किछि सेठी चेंजेस करूछि दैट आई कैन ट्रैक तो एटा कहै दिबो ट्रैक चेंजेस ठीक अछि जहां भी एडिट पॉइंट आपण डिलीटेशन पॉइंट अनुसार और वी कैन से गोटे पॉइंट अनुसार आपण देखि परिबे सेटा कहै जाय ट्रैक चेंजेस फ्यूचर एवं एही ट्रैक चेंजेस फ्यूचर रो काम होछि टू कोलैबोरेट विथ अदर्स ऑप्शन सी हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी इज मेड अप ऑफ कोंतु मेमोरी टा आपण किपरि तयारी करि परिबे और मेमोरी किपरि तयारी होइथाय मेमोरी इज मेड अप ऑफ व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को नेकी मेमोरी आपनकर तयारी होइथाय लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होइज राइट आंसर मन रखंतु मेमोरी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स नेक्स्ट होची पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर कोन हबो कोंतु पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ए दुटा कोन गोटे पेज रो ओरिएंटेशन अटंती ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दुटा पेज रो ओरिएंटेशन दुई प्रकार गोटे पोर्ट्रेट मोड नेक्स्ट होची लैंडस्केप मोड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच इज द फंक्शन बटन फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर पई आपण केउ फंक्शन बटन को यूज करंती स्पेलिंग एंड ग्रामर ट्राई करंतु स्पेलिंग एंड ग्रामर पई F7 यूज करा जाय ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर मन रखंतु F7 को यूज करा जाय स्पेलिंग एंड ग्रामर पई फंक्शन बटन F7 हबो राइट आंसर ऑपेरा मिनी इज ए टेस्ट कोंतु तो ऑपेरा मिनी गोटे कोन हे परिबो ऑपेरा मिनी गोटे कोन हे परिबो ऑपेरा मिनी वेब ब्राउजर हे परिबो ऑप्शन ए ऑपेरा मिनी होचे एक वेब ब्राउजर मन रखंतु वेब ब्राउजर समस्त यूज करछंती नेक्स्ट कॉलम बार पाई लाइन स्कैटर आर टाइप्स ऑफ कोन हटंती चार्ट्स हबो फॉन्ट्स हबो शेप टूल हबो ना ड्राइंग टूल हबो व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर कॉलम गोटे चार्ट आमे जानि छन बार गोटे चार्ट पाई लाइन स्कैटर ऑल आर चार्ट्स कहि परिबा ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर ठीक अछि चार्ट्स इज योर राइट आंसर नेक्स्ट द फार्मूला इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई B2H ओके एटा आपनकर फार्मूला टा
प्रश्न कहूँ यू वांट टू कॉपी दिस फॉर्मूला डाउन द नेक्स्ट 10 रोज रे आपण ये फॉर्मूला को कॉपी करिवे रो वाइज डाउन रो वाइज नेक्स्ट 10 टी रो रे कॉपी करिवे व्हिच एक्सेल फीचर वुड यू यूज सेति में आपण क्यों एक्सेल रो ऑप्शन फीचर मींस ऑप्शन को यूज करि परिवे सेति में कोन करिवे आपण दैट इज ऑटो फिल करिवे ऑप्शन ए हो जबा राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द स्लाइड मास्टर व्यू इन पावरपॉइंट कोन What is the purpose of the slide master view in PowerPoint? PowerPoint रे slide master view रो purpose कोन ही परिबो PowerPoint रे slide master रो काम कोन slide master रो काम होउचे option B to edit the layout and design of slides. It means आपनकर PowerPoint रे slide को यूज करा जाए to create presentation. बट आपण चाहंती आपण आपनक अनुसार it means manually because आपनकर 9 टाइप्स रो कोन रही छि स्लाइड रो लेआउट रही छि एटा भी परीक्षा आसी परिबो मन रखंतु स्लाइड लेआउट 9 टाइप्स रो रही छि बट आपनक माने आमे कहि परिबा काम अनुसार जदि आपण कोनसे एक स्लाइड को फॉर्म करिवे ताहाले आपण स्लाइड मास्टर को जाई परिबे तो स्लाइड मास्टर रो काम होछि टू एडिट द लेआउट एंड डिजाइन ऑफ स्लाइड्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट in slide show view the movement that you see when one slide kon hochi change hochi to another is called kon hobo kuntu slide show view रे गोटे स्लाइड अन्य एक स्लाइड रे जेतेबेले चेंज हुए एवं से चेंज होबा समय रे जदि आपन किछि मूवमेंट लक्ष्य करंती तो सेटा कोन कहजिवो ट्रांजिशन ऑप्शन ए मन रखंतु स्लाइड गोटे स्लाइड रो अन्य एक स्लाइड जेतेबेले चेंज होबो एवं जदि आपण किछि मूवमेंट को लक्ष्य करिवे सेटा को कहजिवो ट्रांजिशन बट इन द स्लाइड रे माने स्लाइड मध्य रे जदि आपण किछि मूवमेंट लक्ष्य करंती लाइक ऑब्जेक्ट हे परिबो किबा आपनकर कोनसे को इमेज रे हे परिबो ओके सेटा को कहजिवो एनिमेशन नेक्स्ट हाउ डू यू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन पावरपॉइंट परीक्षा आसी पारे माइक्रोसॉफ्ट रो पावरपॉइंट रे आपण किपरि गोटिए न्यू स्लाइड को इंसर्ट करि परिबे व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट ए न्यू स्लाइड दैट इज कंट्रोल सहित एम ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर कंट्रोल सहित एम होची शॉर्टकट की दैट इज न्यू स्लाइड इंसर्ट हबो माने रखो पावरपॉइंट रे न्यू स्लाइड को इंसर्ट करिवा पई कंट्रोल सहित एम को यूज करा जाय इन एमएस पावरपॉइंट स्लाइड शटर कमांड इज फाउंड अंडर व्हिच रिबन टैब कोन माइक्रोसॉफ्ट रो पावरपॉइंट रे स्लाइड शटर कमांड आपण केउ रिबन टैब अंडर रे पाइबे स्लाइड शटर रो काम होउची ऑल स्लाइड को आपण गोटिए पेज रे देखि परिबे और स्लाइड को रीअरेंज करि परिबे दैट इज आल्सो स्लाइड शटर रे ही होय और हमें कहि परिबा स्लाइड को थंबनेल आकार देखि परिबे दैट इज आल्सो स्लाइड शटर रे ही होय तो सेति पय आपण व्यू टैब को जिबार अछि व्यू टैब अंडर रे स्लाइड शटर व्यू को एक्सेस करि परिबे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावरपॉइंट व्यू कोंतु निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक पावरपॉइंट रो व्यू नुह निम्नोक्त मध्यरु केउटा एक पावरपॉइंट रो व्यू हेबो नाही नॉर्मल व्यू प्रेजेंटेशन व्यू आउटलाइन व्यू नोट पेज व्यू देखंतु ऑप्शन बी होइबो राइट आंसर प्रेजेंटेशन व्यू गटे व्यू अंडर रे आसीबो नाही ठीक अछि ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए डेटाबेस इन एमएस एक्सेस डेटाबेस तो कोन जानचंती डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे रे स्टोर करिया पई आपण डेटाबेस यूज करते डाटा कोन कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर जहा को रॉ फैक्ट एंड फिगर मध्ये कहआ जाय इट मींस जेतेबेले डाटा प्रोसेस हुए दैट इज इंफॉर्मेशन रे कन्वर्ट हुए बट अनप्रोसेस्ड एटा को डाटा कहआ जिवो ताहाले ए डाटाबेस रो प्राइमरी पर्पस कोन डाटाबेस रो प्राइमरी पर्पस होची टू स्टोर एंड मैनेज डाटा ऑप्शन बी टू स्टोर एंड मैनेज डाटा में कहि परिबो डाटा को स्टोर करबा एवं मैनेज करबा होची डाटाबेस रो प्राइमरी पर्पस व्हिच एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू करबा ऐड करबा एडिट करबा एंड डिलीट करबा डाटा कोन व्हिच एमएस एक्सेस रो ऑब्जेक्ट को यूज करा जाय व्यू ऐड एडिट एंड डिलीट पई डाटा को व्यू डाटा को ऐड करबा डाटा एडिट करबा एंड डाटा डिलीट करबा पई दैट इज फॉर्म को यूज करा जाय ऑप्शन बी फॉर्म इज द राइट आंसर मन रखंतु माइक्रोसॉफ्ट रो ऑब्जेक्ट फॉर्म जरिया रे डाटा को व्यू करि परिबे ऐड करि परिबे एडिट करि परिबे एंड डिलीट करि परिबे व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए प्राइमरी की इन एन एमएस एक्सेस टेबल माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेस टेबल रे प्राइमरी की रो काम कोन
कौन ही प्राइमरी की कहंतु व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्राइमरी की माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेस टेबल रे प्राइमरी की रो काम होउचे टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड ठीक अछि इट मींस ईच रिकॉर्ड को से कोन करबो यूनिकली आइडेंटिफाई करबो इज होची प्राइमरी की रो पर्पस नेक्स्ट व्हिच एमएस एक्सेस फीचर allows you to extract specific data from one or more tables ru कहंतु extract करिवो डाटा को tables ru data को extract करिवो that is Microsoft Access रो केउ फीचर extract करिवो माने कोन that is query करिवो प्रश्न पचारिवो query हिजबो query object हिजबो हेरो राइट आंसर or feature or option next what is the purpose of the relationship in MS Access Microsoft Access रे relationship माने कोन कहंतु because data को जते बेले स्टोर करा जाय that is relational mode रे okay it means option A to combine data from multiple tables that is आपनकर कोन को आजो relationship को आजो it means Microsoft रो access और database रे गोटे टेबल को relationship को आ जाय गोटे relation को आ जाय clear next question what is the full form of GPRS कोन GPRS रो full form कोन हिजो GPRS रो full form कोन होई जिवो ट्राई करबा GPRS रो फुल फॉर्म हेउची जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस GPRS रो फुल फॉर्म कोन जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस नेक्स्ट व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर कंप्रेस्ड फाइल्स कोंतु गोटे कंप्रेस्ड फाइल्स रो फाइल एक्सटेंशन कोन हे परिबो गोटे कंप्रेस्ड फाइल्स रो फाइल एक्सटेंशन हे परिबो .zip जाको zip फाइल मध्य कोआ जाय ठीक अछि कंप्रेस्ड फाइल माने कोन लाइक गोटे 1 GB रो फाइल को कंप्रेस करी कि आपण सेटा को 500 MB किबा ताठारु कम स्पेस रे आपण कन्वर्ट करि परिबे दैट इज कोआ जाउची कंप्रेस्ड ओके नेक्स्ट व्हिच इज द सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द टॉप मार्जिन इट मींस गोटे डॉक्यूमेंट रो टॉप रे जो मार्जिन दिया जाय सेटा कोन कोआ जिवो दैट इज हेडर कोआ जिवो हेडर ऑप्शन ए होबो राइट आंसर चूज करचंती समस्त हेडर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS Excel allow us to give different color sets for the cell based on their values it means कोन आपण different color को add करिवे means that is formatting करिवे but जेतु color ता different रहइबो that is कोन हो conditionally formatting हो so option A is your right answer that is conditional formatting को हजिबो option A is your right answer this was the first personal computer with a graphical user interface options अनुसार which option is your right answer प्रथम पर्सनल कंप्यूटर विथ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हिजबो एप्पल्स लिसा हिजबो राइट आंसर नेक्स्ट इन स्टैंडर्ड कीबोर्ड द कीज ऑल्ट शिफ्ट एंड कंट्रोल आर कॉल्ड एज एटा कोन को हिजबो कोंतु स्टैंडर्ड कीबोर्ड रे ऑल्ट शिफ्ट एंड कंट्रोल्स को ऑप्शंस अनुसार जे देखिबा स्पेशल पर्पस रो की को हिजबो और एल्स जदी ऑप्शन रे रहइबो मॉडिफायर्स की देन दैट इज आल्सो आपनकर आंसर हो आपण जानिचंती ऑल्ट हिगला शिफ्ट हिजबो एंड कंट्रोल को कोन को हिजबो मॉडिफायर्स की मन रखंतु सेमिति न्यू लॉक एंड कैप्स लॉक को टुगुल की कहै जाय कोन कहै जाय टुगुल की मन रखियो लॉक आसियो माने टुगुल ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल हिजबो मॉडिफायर एस इज ए नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी हिजबो ऑप्शन सी रॉन्ग ओके इट मींस कोन डाटा नॉट फॉरगेट जते बेले आपण पावर कट करिवे डाटा इरेज हबो नाही okay data erase hobo nahi that is read only memory which is a non volatile memory random access memory jaku ram ko jaye ram eko kono that is a volatile memory means power cut kariya pare data lost hoy jibo next question number 33 the dash feature of Microsoft Word helps you to create professional formats केउ फीचर ता Microsoft Word रो केउ फीचर जरिया रे आपण क्रिएट करि परिबे प्रोफेशनल फॉर्मेट्स को तिबे मध्ये आपण टेम्पलेट को यूज करंती option C which is right answer templates is your right answer next this feature in Microsoft Excel automatically adjust the cell reference when the formula is copied and pasted into the rest of the cell point cell reference कथा को जाउछि automatically adjust हबो जते बेले आपण फार्मूला को कॉपी करिसंती एवं सेटा को पेस्ट करूसंती into the rest of the cell रे सेति पई relative reference को यूज करि परिबा relative reference is your right answer next in MS Excel the combination of row numbers and column alphabet is called kon hobo kontu Microsoft Excel which is a spreadsheet application software
एथिरे आपण सेल को यूज करंती इट मींस इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को सेल को आजो बट रो रो नंबर आसिला इठी आपनकर कॉलम रो अल्फाबेट आसिला दैट इज सेल एड्रेस हिजो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर स्टोर्स कैच्ड पेजेस इन ए फोल्डर कॉल्ड एटा कोन कहजो इंटरनेट एक्सप्लोरर कोन गोटे ब्राउजर जहा जडिया आपण इंटरनेट को एक्सेस करि परिबे ओके स्टोर करिवो कैच्ड पेजेस को कोन से को फोल्डर रे सेटा कहजो दैट इज ऑप्शन डी होइजो राइट आंसर टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स कहजो सेटा कोन कहजो टेम्पोररी इंटरनेट फाइल्स ऑप्शन डी होइजो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 हाउ टू सेट अप ओरिएंटेशन ऑफ शीट इन एमएस एक्सेल ट्राई करंतु माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे शीट को यूज करा जाय यार ओरिएंटेशन को आपण केमिति सेट अप करि परिबे यार ओरिएंटेशन केते प्रकार दुई प्रकार कोन कोन गोटे पोर्ट्रेट और नेट होची लैंडस्केप ओके तो सेथि में आपण कोन करिवे पेज लेआउट को जिवे देन पेज सेटअप ऑप्शन देन ओरिएंटेशन को यूज करिवे ऑप्शन सी हो राइट आंसर हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन एमएस पावर पॉइंट रे ट्राई करिवे माइक्रोसॉफ्ट रो पावर पॉइंट रे आपण किपरि पिक्चर को इंसर्ट करि परिबे माइक्रोसॉफ्ट रो पावर पॉइंट रे आपण किपरि पिक्चर को इंसर्ट करि परिबे देखंतु इंसर्ट को जिबा देन इमेजेस देन आपण पिक्चर को इंसर्ट करि परिबे ऑप्शन बी होइजो राइट आंसर नेक्स्ट द सॉफ्टवेयर और सेटा एप्लीकेशन ही परिबो दैट यू डाउनलोडेड और विंडोज विल हैव डैश फाइल एक्सटेंशन इट मींस विंडोज पई जते बेले आपण कोनसे को सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को डाउनलोड करंती दैट इज कोन गोटे एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट रे .exe होचे रो फाइल एक्सटेंशन माने फाइल रो प्रकार हमें कहि परिबो आज लास्ट क्वेश्चन इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी द टर्म AR स्टैंड्स फॉर AR माने कोन दैट इज 3D पई यूज करा जाय ना AR रो फुल फॉर्म कोन हिजबो एगमेंटेड रियलिटी ऑप्शन सी AR रो फुल फॉर्म मन रखंतु एगमेंटेड रियलिटी इज द शॉर्टकट की यूज्ड टू सुपरस्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड ट्राई करिबा व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट रो वर्ड रे सुपरस्क्रिप्ट करिबा पई आपण केउ शॉर्टकट की यूज करंती सुपरस्क्रिप्ट कोन लाइक देखंतु मु लिखिबी x रो स्क्वायर x रो पावर क्यूब तो एटा को आजबो सुपरस्क्रिप्ट तो एथि पई केउ शॉर्टकट की यूज करा जाय एथि पई आपण कंट्रोल देन शिफ्ट या सहित प्लस साइन को यूज करंती ऑप्शन ए हो राइट आंसर ओके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस साइन को यूज करा जाय दैट इज आपनकर सुपरस्क्रिप्ट हेबार शॉर्टकट की एंड जदि परीक्षा आसीबो सबस्क्रिप्ट जेमिति सुपरस्क्रिप्ट अछि सेमिति सबस्क्रिप्ट मध्ये अछि सबस्क्रिप्ट केमिति हे परिबो कोन सबस्क्रिप्ट माने कोन जेमिति मु लिखिबी x2 ओके y2 एटा होछि सबस्क्रिप्ट तो यार शॉर्टकट की होछि कंट्रोल प्लस इक्वल साइन दैट इज आपनकर सबस्क्रिप्ट हबो मन रखंतु जदि सुपरस्क्रिप्ट हेबो ताहले कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन एंड जदि सबस्क्रिप्ट करिया पई प्रश्न आसे ताहले कंट्रोल सहित इक्वल साइन ओके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करूँ द विंडोज फाइल सिस्टम NTFS स्टैंड्स फॉर NTFS रो फुल फॉर्म कोन होइजबो कहबा NTFS होचे एक विंडोज फाइल सिस्टम तो यार फुल फॉर्म होचे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS कोन हिजबो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम अटे दैट इज कोन गोटे विंडोज रो फाइल सिस्टम अटे इट मींस सिंपल भाषा रे जदि आपण बुझिबे NTFS होची गोटे प्रॉपर्टी और विंडोज कोन करिवो ऑर्गेनाइज करिवो स्टोर करिवो फाइल को सेटा हार्ड ड्राइव रे ही पारे किबा USB रे ही पारे सिंपली बुझंतु गोटे प्रॉपर्टी NTFS ओके नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 3 टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस डैश की कॉम्बिनेशन कोन तो देखिबा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करिबा पई केउ शॉर्टकट की यूज करा जाय न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन ऑप्शन बी समस्त यूज करछंती ऑप्शन बी हो राइट आंसर कंट्रोल प्लस एन इज योर राइट आंसर नेक्स्ट ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 4 एस इज एनी मैकेनिज्म व्हिच बाईपास ए नॉर्मल सिक्योरिटी चेक और एन्क्रिप्शन इन ए कंप्यूटर व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर इट मींस आपण जदि प्रश्नटी को बुझिबा पई चाहिबे से एहा पचारुची निम्नक्त मध्यरु केउटा एक मेकानिज्म जरिया रे व्हिच बाईपास करिवो ए नॉर्मल सिक्योरिटी चेक हे पारे और एन्क्रिप्शन हे पारे इन ए कंप्यूटर मींस हिडन मेथड को यूज करी अनऑथराइज्ड एक्सेस हबो और आपण सिंपली जदि बुझिबे दैट इज सीक्रेटली एंटर हबो तो सेटा को आपण को कंप्यूटर रो कोन एंटीवायरस डिटेक्ट करि परिबो नाही तो सेही मेकानिज्म को कोन कहै जाय
बैकडोर कह जाए बैकडोर द्वारा कौन हम आपन कंप्यूटर रे वायरस अटैक हम ठीक अछि मिलिशियस अटैक हम दैट इज बैकडोर मेकानिज्म मन रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आफ्टर फिनिशिंग योर एडिट्स on a document you need to perform this action to make the changes permanent आपण जते बेले एडिट करंती एडिट करिवा परे आपण को डॉक्यूमेंट रे आपण कोन एक्शन परफॉर्म करिवे सो दैट सेटा परमानेंट रहइबो एडिट करिवा परे सेव एक्शन को परफॉर्म करा जाय ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर व्हिच ऑप्शन बी सेव इज योर राइट आंसर मन रखंतु आपण कोन करिवे सेव को परफॉर्म करंती ओके ऑप्शन बी समस्त चूज करछंती मन रखिबा एटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 द कंप्यूटर इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट पोस्ट स्टैंड्स फॉर कोन हो कहबा POST पोस्ट रो फुल फॉर्म कोन हिजबो कोंतु व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट रो फुल फॉर्म कोन हिजबो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑप्शन सी हुजबो राइट आंसर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होजी पोस्ट रो काम इट मींस गोटे डायग्नोस्टिक प्रोसेस जहाँ आपनकर कंप्यूटर जिते बेले आपण रन करंती इट मींस आपनकर जिते बेले ऑपरेटिंग सिस्टम टा एक्टिव हुए लाइक कोन आपनकर बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम एक्टिव हुए बायोस तो ये पोस्ट रो काम होची हार्डवेयर ठीक अछि ना नहीं आपनकर सॉफ्टवेयर ठीक चली छि कि नहीं ठीक अछि इट मींस कोन सब जिनिस ठीक अछि कि नहीं ताहा चेक करिवो एही पोस्ट रो काम दैट इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑप्शन सी हो जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिबा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज ए डेस्क सॉफ्टवेयर कोंतु माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेस गोटे केउ प्रकार रो सॉफ्टवेयर ही परिवो RDBMS NDBMS HDBMS ना ODBMS माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेस हो जेको RDBMS सॉफ्टवेयर मींस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रो गोटे सॉफ्टवेयर अटे ओके रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रो एक सॉफ्टवेयर अटे नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफॉल्ट फोल्डर इन MS आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट रो आउटलुक आपण कोथि पे व्यवहार करंती माइक्रोसॉफ्ट रो आउटलुक को मेलिंग्स पे व्यवहार करा जाय ठीक अछि मेलिंग्स क्षेत्र रे माइक्रोसॉफ्ट रो आउटलुक को व्यवहार करा जाय एथिरे इनबॉक्स रहिछि जहां मेसेज आपण को निकट को आसे जहां आपण पठांती दैट इज कोन सेंट आइटम्स स्पैम कोन स्पैम होछि किछि अनऑथराइज्ड और किछि आपण कहि परिबे एड पर्पस रे एडवर्टाइजमेंट पर्पस रे विथआउट एक्सेस रे जदि आपण मेसेज रिसीव करंती दैट इज स्पैम फोल्डर आसीबो बट आपनकर डाउनलोड्स नाही तो ऑप्शन डी होइबो राइट आंसर डाउनलोड्स फोल्डर आपनकर माइक्रोसॉफ्ट रो आउटलुक रे आपण देखिबा पई पाइबे नाही बुझियला नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट वेन डायग्राम इन MS वर्ड आपण माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे वेन डायग्राम को केमिति क्रिएट करि परिबे वेन डायग्राम व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट रो वर्ड रे वेन डायग्राम को केमिति क्रिएट करा जिवो प्रथमे आपण इंसर्ट को जिवे देन स्मार्ट आर्ट ग्रुप को जाई की वेन डायग्राम को क्रिएट करि परिबे ऑप्शन बी हबो राइट आंसर प्रथम इंसर्ट विंडो और मेनू जहां को कहा जाय देन स्मार्ट आर्ट रो ग्रुप को जिबा देन सेठी आपण इट मींस कोन स्मार्ट आर्ट को जिबा देन वेन डायग्राम को एक्सेस करा जाई परिबो नेक्स्ट लेजर डॉट मैट्रिक्स इंकजेंट लाइन आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ कोन हटे लेजर डॉट मैट्रिक्स इंकजेंट लाइन गोटे गोटे प्रिंटर अटंती ऑप्शन बी प्रिंटर हो जो राइट आंसर तो गोटे गोटे कोन अटंती प्रिंटर अटंती मन रखंतु लेजर डॉट मैट्रिक्स इंकजेट लाइन गोटे गोटे प्रिंटर अटंती व्हाट इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन कॉल्ड प्रोग्राम गोटे एग्जीक्यूशन हबो या कोन कहै जिवो प्रोग्राम गोटे एग्जीक्यूशन हबो मींस दैट इज प्रोसेस कहबा ऑप्शन बी हबो राइट आंसर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कॉल्ड प्रोसेस कहै जिवो ऑप्शन बी मन रखंतु नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अप्लाई डबल अंडरलाइन इन MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे आपण डबल अंडरलाइन अप्लाई करिवा पई केउ शॉर्टकट की यूज करंती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे डबल अंडरलाइन अप्लाई करिवा पई दैट इज कंट्रोल शिफ्ट सहित डी को प्रेस करा जाय ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर मन रखंतु कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी ओके नेक्स्ट बैकग्राउंड कलर ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन गोटिए डॉक्यूमेंट रो बैकग्राउंड रे थिबा कलर निम्नक्त मध्यरु केउ व्यू रे विजिबल हेबो नाही इट मींस देखा जिवो नाही दैट इज प्रिंट प्रीव्यू मोड रे ऑप्शन डी हबो मन रखंतु प्रिंट प्रीव्यू मोड रे गोटे डॉक्यूमेंट रो बैकग्राउंड रे थिबा कलर को आपण देखि परिबे नाही प्रिंट प्रीव्यू कोन प्रिंट प्रीव्यू हेउची प्रिंट बाहर करिवार पूर्व व्यूटा दैट इज प्रिंट प्रीव्यू सिंपली बुझंतु इट मींस काहे कि प्रिंट प्रीव्यू निया जाय बिकॉज़ जेतेला आपण प्रिंट बाहर करंती आपनकर मार्जिन और आपण जहां भी डाटा को सेट करिसंती दैट इज
within the page रे आपनकर आसे कि नाही सेटा को व्यू करिया पई print preview कहा जाय next question number 14 ट्राई करंतु name the application under MS Office software bundle that we use to create audio visual presentation Microsoft Office रो गोटे एटा bundle under रे आसीबो माने गोटे पैकेज Microsoft Office रो गोटे पैकेज जहा कोथि में व्यवहार करा जाय ना क्रिएट करा जाय ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन तो निम्नोक्त मध्यरु कोनटा हिजबो Microsoft रो पावर पॉइंट इज योर राइट आंसर एक्सेल को कोथि में यूज करा जाय स्प्रेडशीट फॉर कैलकुलेशन पर्पस रे वर्ड को दैट इज डॉक्यूमेंटेशन वर्ड प्रोसेसिंग पई एक्सेस को डाटा को स्टोर करिया पई ठीक अछि गोटे डाटाबेस नेक्स्ट इन Microsoft Word you can enhance the look of an entire document by applying कोन देखिबा Microsoft रो वर्ड रे आपण डॉक्यूमेंट को एनहांस करिवे मींस कोन टिके स्टाइलिश करिवे टिके सुंदर भाबरे आपण सेटा को क्रिएट करिवे सेति पय आपण थीम्स को ऐड करि परिवे अप्लाइंग थीम्स को जिवे डिफरेंट थीम्स रहिछि सेटा को ऐड करि परिवे ओके देन एट रहला आपनकर वाटरमार्क कोन वाटरमार्क होछि पेज रो बैकग्राउंड रे मन रखंतु पेज रो बैकग्राउंड रे ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट आपनकर देखिया पय मिले दैट इज वाटरमार्क समिति वर्ड आर्ट कोन वर्ड आर्ट होछि हा किछि डेकोरेटिव टेक्स्ट को वर्ड आर्ट कहा जाय ऑप्शन बी हबो राइट आंसर इन कंप्यूटर्स CAD स्टैंड्स फॉर कोन हबो कोंतु CAD रो फुल फॉर्म कोन हिजबो CAD रो फुल फॉर्म कोन होइजिबो कहबा इन कंप्यूटर्स CAD स्टैंड्स फॉर दैट इज ऑप्शन व्हिच ऑप्शन CAD होछि कंप्यूटर एडेड डिजाइन हबो ऑप्शन बी ओके CAD स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन बेसिकली आपण सॉफ्टवेयर क्षेत्र रे एटा को यूज करंती सिंपली मन रखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द हेडिंग्स एंड देयर करस्पोंडिंग पेज नंबर्स आपण हेडिंग एवं हेडिंग सहित तार से हेडिंग ता बा से टॉपिक ता केते नंबर पेज रे अछि एटा को आपण जानिबा पई कोन करंती टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज करंती ऑप्शन ए होइछ राइट आंसर सेति में टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज करा जाय नेक्स्ट The computer network LAN stands for कोन हो कोंतु आपनकर जो कंप्यूटर नेटवर्क रे LAN रछि ए LAN रो फुल फॉर्म होछि लोकल एरिया नेटवर्क ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर लोकल एरिया नेटवर्क इज वो LAN रो फुल फॉर्म नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन Microsoft Excel can be used to print only a specific area or range of cells on a worksheet प्रश्न कोन कहला Microsoft Excel रो क्वेश्चन Microsoft Excel रे कोन यूज करा जाय वर्कशीट को यूज करा जाय कि नै ओके ताहले ए वर्कशीट रे आपण प्रिंट करिवे किछि स्पेसिफिक एरिया ही परिबो सेटा रेंज ही परिबो आरो सेल रो सेति पय आपण कोन करिवे सेति आपण प्रिंट एरिया को सिलेक्ट करिवे प्रिंट एरिया ऑप्शन को सिलेक्ट करिवे ऑप्शन ए हबो राइट आंसर नेक्स्ट दिस इज द रेंज ऑफ सेल where the lookup values you want to return by the function are located प्रश्न बुझंतु प्रथमे प्रश्न कहूची डेस इज द रेंज ऑफ सेल गोटे सेल रो रेंज हबो जेंथारे लुकअप वैल्यूज यू वांट टू रिटर्न बाय द फंक्शन आर लोकेटेड दैट इज हिजो आपनकर टेबल एरे ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करंतु दिस इज ए कनेक्शन फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर और कनेक्शन टू ए वेब पेज और ए फाइल तो सेटा कोन कहजबो गोटे लिंक हाइपर लिंक कहजबो ऑप्शन ए हाइपर लिंक इज योर राइट आंसर then what is the shortcut key for hyperlink मन रखंतु कंट्रोल सहित जेतेबेले आपण k को प्रेस करिवे देन आपनकर हाइपरलिंक एक्टिव होबो राइट मन रहला जेतेबेले आपण कंट्रोल सहित k प्रेस करिवे दैट इज हाइपरलिंक एक्टिव हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 द कांसेप्ट ऑफ गेटिंग द वैल्यू फ्रॉम ए डिफरेंट सेल इनटू द करंट सेल इज कॉल्ड द कांसेप्ट ऑफ गेटिंग वैल्यू को कोन करिवे डिफरेंट सेल रो वैल्यू को आपण गोटे निर्दिष्ट सेल को नै के आसीबे तो एटा कोन कहै जबो सेल रेफरेंसिंग कहै जबो सेल रेफरेंसिंग ऑप्शन ए होय जबो राइट आंसर नेक्स्ट दिस ऑप्शन इन Microsoft Word allows you to easily type in complex mathematical and scientific formulas Microsoft Word रे आपण केउ ऑप्शन जरिया रे किछि भी मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक फार्मूला को इजीली आपण टाइप करि परिबे सेति पय इक्वेशंस को तो यूज करा जाय कोन हिजबो ऑप्शन बी इक्वेशंस इज योर राइट आंसर इक्वेशंस को यूज करा जाय नेक्स्ट this function in Excel is used to remove decimal or fractional part of the number गोटे नंबर जदि आपनकर फ्रैक्शन रे अछि और सेटा जदि आपनकर डेसिमल रे अछि मींस दशमिक संख्या रे अछि तो सेटा को आपण रिमूव करिया पई ट्रंक फंक्शन यूज करंती
मन रखंतु इक्वल ट्रंक फंक्शन को यूज करा जाए। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट, द कंप्यूटर दैट इज शेयर्स डाटा एंड रिसोर्स टू क्लाइंट कंप्यूटर इज कॉल्ड। निम्नलिखित मध्यरु क्यों ऑप्शन इज राइट आंसर। गोटे कंप्यूटर कौन करिवो शेयर करिवो डाटा किबा रिसोर्स काहा को क्लाइंट कंप्यूटर को, तो सही प्रकार कंप्यूटर को कहजिवो सर्वर कंप्यूटर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सर्वर रो काम होची सर्विस प्रोवाइड करिवो काहा को डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट कंप्यूटर को। सर्विस माने कोन जहा को डाटा, सर्विस रे से कोन प्रोवाइड करे डाटा प्रोवाइड करे। नेक्स्ट बुलेट्स एंड नंबर्ड लिस्ट आर अवेलेबल इन डैश ग्रुप कोंतु। बुलेट्स आपनकर एवं नंबर्ड लिस्ट अवेलेबल रहउची केउ ग्रुप अंडर रे, दैट इज पैराग्राफ ग्रुप अंडर रे। ऑप्शन ए हो जो राइट आंसर, पैराग्राफ ग्रुप इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट द टर्म शटडाउन ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ता आपनकर शटडाउन हबो मींस दैट इज टर्न ऑफ द पीसी हो जो, टर्न ऑफ द पीसी ताहले पीसी रो अर्थ कोन दैट इज पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट द एक्सेल फीचर that allows you to show only selected rows based on a condition। देखंतु एक्सेल रो केउ फीचर माने केउ टूल जरिया रे आपण ओनली शो करि परिबे किछि कंडीशनल और किछि गोटे कंडीशन देकी रो को शो करिवे। सेति पई मींस कोन शो एंड हाइड रो कथा आसुची, दैट इज आपण फिल्टर को यूज करि परिबे। फिल्टर रो अर्थ होची शो एंड हाइड पई यूज करा जाय। इट इज शॉर्ट रोइला, शॉर्ट माने आपण सजेबे सेटा असेंडिंग टू डिसेंडिंग और डिसेंडिंग टू असेंडिंग। नेक्स्ट माने बड़ टू छोटो किबा छोटो टू बड़, बड़ सानो सानो बड़ एमिति कहै जाय। नेक्स्ट एस मेमोरी लॉस इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन द पावर इज ऑफ माने कोन होबो सेटा दैट इज वोलेटाइल। ओके से फॉरगेट करि जिवो डाटा को, तो सेटा होचे आपनकर RAM इज रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी मन रखंतु। वोलेटाइल अन्यटी होची नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल नॉट फॉरगेट बट वोलेटाइल फॉरगेट करिवो जेतेले पावर लॉस हुए। नेक्स्ट the term HDD in computer storage stands for, HDD रो फुल फॉर्म कोन हिजबो कोंतु। HDD होची हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, हार्ड डिस्क ड्राइव होची आपनकर HDD। सेमति SSD रो फुल फॉर्म कोन हिजबो SSD। SSD आल्सो यूज करा जाय स्टोरेज पर्पस रे एक्सटर्नली, एटा होची सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD परीक्षा राशि पारे। नेक्स्ट एस लुकअप ऑपरेशन इन एक्सेल लुक्स फॉर वैल्यू in the leftmost column of a table। ट्राई करंतु एस लुकअप ऑपरेशन निम्नलिखित मध्यरु केउ लुकअप ऑपरेशन जरिया रे एक्सेल रे लुक्स फॉर वैल्यू इन द लेफ्टमोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। एस लुकअप ऑपरेशन इन एक्सेल व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न कोन कहूची एक्सेल रे गोटे ऑपरेशन दैट इज लुकअप ऑपरेशन माने लुकअप टा बेसिकली फाइंड पर्पस रे यूज करा जाय। in the leftmost column of a table माने column रे कथा कहै जाउची दैट इज vertically v lookup हिजो। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेस कोंतु। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करबा पई केउ शॉर्टकट की यूज करा जाय। सेव एज डायलॉग बॉक्स पई F12 को यूज करा जाय। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल प्रोटोकॉल इज यूज्ड to retrieve emails from a mail server। retrieve आपनकर तीनोटी प्रोटोकॉल को यूज करा जाय। प्रोटोकॉल कोन प्रोटोकॉल होची किछि रूल एंड रेगुलेशन को प्रोटोकॉल को आ जाय। मन रखंतु किछि रूल एंड किछि रेगुलेशन को जहा फॉलो करिवो दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। एवं ईमेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेल क्षेत्र में तीनोटी प्रोटोकॉल होची। गोटे होची SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एटा आपनकर सेंडिंग पर्पस रे एवं एई दुईटा आपनकर रिसीविंग पर्पस रे यूज करा जाय। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एवं इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। बट आपनकर ए दुटा माने एटा कटिला एटा सेंडिंग पई, HTTP तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो एटा भी अलग कथा कटि गला। बट आपनकर ऑप्शन बी एंड सी रहला। ए दुटा मधुर के उठाबो देखंतु POP3 प्रोटोकॉल एटा आपनकर ए दुटा रिसीविंग पई यूज करा जाय। ठीक है मेल को रिसीव करिया पई। बट एठी कोन कहै रिट्राइव ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर माने POP3 प्रोटोकॉल हिजो। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, POP3 protocol is your right answer। Next question number 34 try करंतु। The block of text inserted automatically at the end of an email message is called। प्रश्न कहूची गोटे ईमेल रो एंड रे आपण जो टेक्स्ट इंसर्ट करंती एंड रे माने सेटा कहजो ईमेल रो सिग्नेचर कहजो। ऑप्शन ए ईमेल रो सिग्नेचर। URL रो फुल फॉर्म कोन हिजो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जहा को एड्रेस कहजो। वेब रो एड्रेस होची URL। नेक्स्ट
high level languages were introduced in which generation of computer कहंतु क्यों generation of computer समय रे high level language को introduce करा गला that is third generation of computer option C हो जिवो right answer third generation of computer बेला को high level language को introduce करा गला next this is the process of finding and resolving bugs during the software development process this is the process of finding and resolving bugs bug माने कोन bug माने error जते बेले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करा जाए तो सेते बेले किछि जदी एरर आसीबो राइट एरर आसीबो सेटा को आजो बग तो ए बग को फाइंड करबा एवं एहा को सॉल्व करबा तो एटा को आजो डिबगिंग ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर कोन को आजो डिबगिंग को आजो बग डिबग मन रखंतु इन एमएस ऑफिस वर्ड डैश इज यूज्ड टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट देखंतु एठी कोन कहला कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट एठी टेक्स्ट कथा कहि नै एठी टेक्स्ट रो फॉर्मेट कथा कहिछि फॉर्मेट कोन कोन हे परिबो फॉर्मेट हे परिबो टेक्स्ट रो स्टाइल यार बैकग्राउंड कलर यार फोरग्राउंड कलर यार साइज ओके एमिति किछि हमें कंसीडर करि परिबा दैट इज फॉर्मेट तो सेति पय आपण फॉर्मेट पेंटर को यूज करंती ऑप्शन ए हो जिवो राइट आंसर इसमें कोन यूज करा जाय फॉर्मेट पेंटर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू ऐड ए blank cell above the selected cell right what is selected cell रो ऊपर above रे गोटे ब्लैंक सेल ऐड करिवे सेति आपण के ऑप्शन को यूज करि परिबे देखंतु प्रथमे राइट क्लिक करिवा देन इंसर्ट ऑप्शन को दिबा देन शिफ्ट सेल डाउन ऑप्शन डी हो जिवो राइट आंसर नेक्स्ट दिस इज द प्लेस वेयर वी डिजाइन द स्लाइड बाय टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग दिस इज द प्लेस हमें कोन करंती डिजाइन करंती काहा को ना स्लाइड को माने माइक्रोसॉफ्ट रो एटी पावर पॉइंट कथा को जाउची तो सेठी आपण टाइपिंग करबी ना फॉर्मेटिंग करिकि भी सेटा कोन करंती डिजाइन करंती तो स्लाइड रो पैन को यूज करि परिबा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर आज रो लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राउटर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क राउटर रो प्राइमरी फंक्शन कोन हो कोन व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर राउटर रही छि जेमति मॉडेम रही छि आपनकर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करिवो डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल रे कन्वर्ट करिवो मॉडेम जेमति गेटवे रही छि लाइक दैट राउटर रो काम होछि मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करिवो एंड ट्रैफिक भाबरे गोटे काम करिवो रूट ट्रैफिक बिटवीन देम ऑप्शन बी हो जो राइट आंसर इन ए ब्राउजर द यूआरएल ऑफ द करंट पेज इज डिस्प्लेड एट ट्राई करंतु इन ए ब्राउजर रे गोटे ब्राउजर रे यूआरएल कोन प्रथम कथा कहबा व्हाट इज यूआरएल कहंतु यूआरएल रो फुल फॉर्म कोन एवं कोन एही यूआरएल होछ आपनकर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दैट इज द एड्रेस को हजबो गोटे वेब पेज रो इट मींस कोन से को ब्राउजर रे यूआरएल of the current page means कोन सही पेज रो that is address ओके एटा कोन एड्रेस होटे एवं एटा डिस्प्ले हबो माने ताहा देखा जिवो केउठारे एड्रेस बार रे जेहेतु एटा गोटे एड्रेस तो एड्रेस बार रे शो हेबो ऑप्शन बी समस्त चूज करछंती ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर माने रखंतु यूआरएल हेउची गोटे वेब रो एड्रेस बुझियला यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हेउची एको एड्रेस ठीक अछि एड्रेस माने रखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर What is BCC in email? इलेक्ट्रॉनिक मेल रे BCC कोन बा BCC रो फुल फॉर्म एठारे पचारि छि BCC रो फुल फॉर्म कोन हे BCC होछि ब्लाइंड कार्बन कॉपी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर समस्त चूज करछंती ब्लाइंड कार्बन कॉपी ओके BCC कोन ब्लाइंड कार्बन कॉपी ओनली CC रहबो दैट इज कार्बन कॉपी बट BCC होछि आपनकर ब्लाइंड कार्बन कॉपी ठीक अछि ब्लाइंड कार्बन कॉपी मन रखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 DNS stands for कोन हबो कोंतु DNS रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो ट्राई करंतु DNS रो फुल फॉर्म कोन हे जिवो डोमेन नेम सिस्टम ऑप्शन बी DNS stands for डोमेन नेम सिस्टम देन कोन हे डोमेन नेम सिस्टम जेमिति म कहबी देखंतु google.com तो एठी कोन होची .com होची गोटे डोमेन नेम google.com क्लियर तो एही .com और .in एमिति आसबो दैट इज गोटे डोमेन तो DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम ठीक अछि समस्त बी चूज करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू समराइज डाटा इन ए टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेस रे डाटा को समराइज करिबा पई आपण केउ टूल को यूज करि परिबे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू समराइज डाटा in a table in Microsoft Access summarize माने कोन summarize means गोटे लार्ज टेक्स्ट को आपण
और गोटे लार्ज ग्रुप ऑफ टेक्स्ट को स्मॉल ग्रुप ऑफ टेक्स्ट रे आपण कन्वर्ट करि परिबे संक्षिप्त जहा को कहजिवो सेति आपण कोन करि परिबे रिपोर्ट फॉर्म क्यूरी और व्हिच ऑप्शन रिपोर्ट ही परिबो ऑप्शन ए रिपोर्ट आपण यूज करि परिबे रिपोर्ट जरिया रे माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेस रे टेबल रे डाटा को आपण समराइज करि परिबे ऑप्शन ए रिपोर्ट इज योर राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 which of the following is used to create a pivot table in Microsoft Access Microsoft रो एक्सेस रे प्रश्न पचरा जाउछि which of the following is used निम्नलिखित मध्यरु केउंटा को व्यवहार करा जाय to create करिवा पई pivot table को Microsoft रो एक्सेस रे गोटिए pivot table आपण क्रिएट करिवे सेति पई आपण कोन यूज करि परिबे सेति पई pivot table रो विजार्ड को यूज करि परिबे ऑप्शन ए pivot table विजार्ड हेबो हेरो राइट आंसर ठीक अछि गोटे पिवट टेबल को क्रिएट करिवा पई पिवट टेबल रो विजार्ड को यूज करि परिबे आपण ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एक कुकी कोन हो कोंतु गोटे कुकी कोन व्हाट इज कुकी व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर व्हाट इज कुकी कोन है कुकी कुकी होची ऑप्शन ए स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी इट मींस आपण वेब रे जहां भी सर्च करंती जहां भी डाउनलोड करंती जहां भी अपलोड करंती दैट इज योर वेब एक्टिविटी तो सेही वेब एक्टिविटी माने कोन जरा यूजर जने यूजर यूज करूची वेब को बा इंटरनेट को सेही एक्टिविटी को स्टोर करिवो राइट दैट इज होची कुकी दैट इज कोन है कुकी माने रखंतु स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी होची गोटे कुकी कहै जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन Windows 10 allows you to uninstall or change installed software application प्रश्न कह जाउछि Windows 10 रो ऑपरेटिंग सिस्टम रे मींस आपन को कंप्यूटर रे निम्नलिखित मध्यरु केउ ऑप्शन आपन को अलाउ करिवो आपन अनइंस्टॉल करिवे और इंस्टॉल करिवे कोनोसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सेति में आपन केउ ऑप्शन को जाई परिवे सेति में कंट्रोल पैनल रो ऑप्शन को जाई परिवे इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल प्रोग्राम को जाई परिवे तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर कंट्रोल पैनल एबो हेरो राइट आंसर ओके कंट्रोल पैनल ऑप्शन रे लाइक आपन को कंप्यूटर रे कंट्रोल पैनल होची गोटे सेटिंग भली काम करिवो आपन को मोबाइल फोन रे जेमिति कोन थाए सेटिंग थाए सेमिति कंप्यूटर रो सेटिंग होची कंट्रोल पैनल सिंपली बुझंतु सेठारे आपन को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल एवं अनइंस्टॉल करि परिवे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन कोंतु गोटे एक्टिव सेल रो कंटेंट केउ ठारे डिस्प्ले हबो केउ ठारे हा देखा जिवो दैट इज फार्मूला बार जहां भी आपण सेल रे टाइप करिवे और जहां भी कंटेंट आपण कर सेल रे रहिछि दैट इज आल्सो शो हबो डिस्प्ले हबो फार्मूला बार रे ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट डज गटर रेफर टू इन द पेज सेटअप सेटिंग ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एटा वर्ड प्रोसेसर करंतु ठीक अछि वर्ड प्रोसेसर रे लाइक प्रश्न को जाउछि एमएस वर्ड रो प्रश्न एमएस वर्ड रे पेज सेटअप सेटिंग रे आपण गटर को यूज करिवे तो कोन है गटर ए गटर गोटे कोन पेज रो मार्जिन अटे ऑप्शन सी इज राइट आंसर गोटे पेज रो मार्जिन इज गटर लाइक देखंतु एटा होछि गोटे पेज एवं दुईटा पेज मध्ये जो मार्जिन दिया जाय दैट इज कहदिबो आपनकर गटर मार्जिन ठीक अछि जनरली एटा आपण जे बाइंडिंग करंती ओके कोनोसी नोट को बाइंडिंग करंती तो से बाइंडिंग समय रे जो मार्जिन दिया जाय दैट इज कहदिबो गटर गटर हेउचे एक पेज मार्जिन परीक्षा रे जदी प्रश्न आसीबो पेज मार्जिन हेबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आईपी वर्जन 4 एड्रेस टा यारो केते बिट हबो कोंतु इंटरनेट प्रोटोकॉल रो वर्जन 4 एड्रेस होचे आपनकर 32 बिट ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर ठीक अछि इंटरनेट प्रोटोकॉल रो वर्जन 4 एड्रेस होचे 32 बिट मन रखंतु 32 बिट हेबो यारो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 which of the following is used to create or design a web page गोटे वेब पेज को क्रिएट करिबा किंबा वेब पेज को डिजाइन करिबा पई आपण निम्नलिखित मध्यरु केउंटा को यूज करंती निम्नलिखित मध्यरु केउंटा को यूज करंती हाइपर टेक्स्ट रो मार्कअप लैंग्वेज एचटीएमएल को यूज करा जाय गोटे वेब पेज को क्रिएट करिबा किंबा वेब पेज को डिजाइन करिबा पई एचटीएमएल को यूज करा जाय जहां आपनकर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज अटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 an identifier that sends and receives information across the internet is called गोटे आइडेंटिफायर सटे जहां सेंड करिवो किबा रिसीव करिवो का को इंफॉर्मेशन को across the internet
इज कॉल्ड कोन हिजो दैट इज हिजो आपनकर आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल रो एड्रेस हिजो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस एंड प्रत्येक कंप्यूटर रे मन रखंतु आपनकर आईपी एड्रेस टा यूनिक रहबो मींस अलग अलग रहबो ठीक अछि यूनिक आईपी एड्रेस रहबो प्रत्येक कंप्यूटर रो नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी एनआईसी रो फुल फॉर्म कोन हिजो कोंतु एनआईसी रो फुल फॉर्म कोन होइजिबो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जहा जरिया रे आपण नेटवर्क को एक्सेस करंती नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हेबो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच व्यू अलाउ टू मॉडिफाई टेबल्स स्ट्रक्चर इन एक्सेस एक्सेस मींस माइक्रोसॉफ्ट रो एक्सेस रे केउ व्यू जरिया रे टेबल रो स्ट्रक्चर को आपण मॉडिफाई करि परिबे मींस एडिट करि परिबे दैट इज केउ व्यू ता होची आपनकर डिजाइन व्यू रे आपण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रे टेबल रो स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच की स्ट्रोक मूव्स द एक्टिव सेल टुवर्ड्स लेफ्ट इन एक्सेस टेबल मूव सब कोन दैट इज एक्टिव सेल टुवर्ड्स लेफ्ट को सेति भाई शिफ्ट सहित टैब प्रेस करि परिबे शिफ्ट सहित टैब हेबो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ की zooms the content of active cell in access table रे zoom पई आपनकर shift सहित F2 ऑप्शन सी इज राइट आंसर शिफ्ट सहित F2 फॉर zoom मन रखंतु नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइलाइट द एंटायर कॉलम इन एक्सेल एंटायर कॉलम को हाइलाइट करबा पई केउ शॉर्टकट की यूज करा जाय एंटायर कॉलम को हाइलाइट करबा पई आपण कंट्रोल सहित स्पेस बार को यूज करि परिबे ऑप्शन डी हबो हेरो राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन निम्नलिखित मध्यरु केउटा एक पेज रो ओरिएंटेशन अटे पेज रो ओरिएंटेशन कोन हे परिबो पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड सो ऑप्शन रे कोन अछि ऑप्शन ए रे अछि लैंडस्केप तो लैंडस्केप हिजो हेरो राइट आंसर लैंडस्केप होची गोटे पेज रो ओरिएंटेशन एटा होची पोर्ट्रेट मोड देन एटा होची आपनकर लैंडस्केप मोड you can select all the text in MS Word document by control A for select all next to open the existing presentation press existing कथा को जाउछ not new इट इज न्यू प्रेजेंटेशन कथा को जाय नाही existing means already जहा सेव अछि एथि पई कंट्रोल सहित ओ को प्रेस करा जाय कंट्रोल ओ टू ओपन द existing presentation next question number 21 ट्राई करंतु the file that consists of ready-made styles that we can easily use for our presentation is known as the file that consists of ready-made styles रो गोटे फाइल अटे जहा को आपण यूज करि परिबे इजीली फॉर योर प्रेजेंटेशन बाय तो सेटा को दिबो टेम्पलेट्स फाइल ऑप्शन बी टेम्पलेट फाइल हबो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन यूज माइक्रोसॉफ्ट रो पावरपॉइंट रे जहा भी स्लाइड अछि समस्त स्लाइड को आपण गोटिए स्क्रीन रे देखिया पई चाहती सेति पई स्लाइड शॉर्टर व्यू जरिया रे आपण देखि परिबे ओके प्रश्न आसीबो थंबनेल आकार रे देखिया पई चाहती दैट इज आल्सो स्लाइड शॉर्टर व्यू और जदि प्रश्न आसीबो आपनकर प्रश्न आसीबो दैट इज कोन स्लाइड शॉर्टर व्यू रे आपण रीअरेंज करिया पई चाहती राइट आपण जदि रीअरेंज करिया पई चाहती दैट इज आल्सो हबो आपनकर स्लाइड शॉर्टर व्यू क्लियरली बुझियला स्लाइड शॉर्टर व्यू इज योर राइट आंसर next question number 23 try करबा small programs that appear on sidebars of a web page update currency rates world clock etc are called कोन हबो कोंतु small programs that appear on sidebars of a web page like update हला currency rate हला और world clock हला तो ए सबुडा कोन कहै जिवो ए सबुडा कहै जिवो widgets कहै जिवो ऑप्शन ए widgets is your right answer माने रखंतु widgets हबो यार राइट आंसर For addition of a row at the end of a table, move the cursor at the end and use. आपण रो को कोन करिवे एडिशन करिवे at the end of the table रे सेतमे move the cursor and end कोन यूज करिवे सेतमे आपण tab की यूज करिवे ऑप्शन बी है राइट आंसर ओके एंड यूज tab की जल्दी बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करंतु व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज गोटिए पेज रो आउटसाइड रे ओके गोटिए पेज रो आउटसाइड रे जदि आपण किछि ब्लैंक स्पेस देखिया पई पांती सेटा कोन कहै जिवो मार्जिन्स कहै जिवो मार्जिन एवं जदि एटा होछि आपनकर पेज टा जदि एटा टॉप रे दिया जाइछि दैट इज हेडर जदि एटा बॉटम रे दिया जाइछि एटा कहै जिवो फुटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 which is the shortcut key to display the desktop when you have other files open कोंतु which is the shortcut key to display the desktop it means कोन
आपणकर डेस्कटॉप क्या कहूँ प्रथम आप डेस्कटॉप को जो डिस्प्ले करेंगे देन व्हाट इज डेस्कटॉप आपण कंप्यूटर रो स्क्रीन जिते ऑन हुए ठीक अच्छे तो ऑन होगा पर जो आप स्क्रीन टी विजुअल हुए दैट इज होची आपनकर डेस्कटॉप माने कंप्यूटर रो होम स्क्रीन आमे कहि परिबा राइट इट मीन्स आपण कोन से एप्लिकेशन ओपन करिसथि आपण चाहती डेस्कटॉप को शो करेबे सेति पई विंडोज की सहित डी को प्रेस करा जाय ऑप्शन सी विंडोज की प्लस डी हेबो हेरो राइट आंसर व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड देखंतु आमे जानि छथि F5 जदि आमे प्रेस करिबा दैट इज कोन हबो आपनकर स्लाइड ओपन हबो स्लाइड फुल स्क्रीन रे आसीबो दैट इज कहा जाउची स्लाइड शो ओथरे पावर पॉइंट रे बट एटी प्रश्न कहा जाउची आपण करंट पेज रु मानेकर स्लाइड 1 अछि स्लाइड 2 अछि स्लाइड 3 अछि स्लाइड 3 टू आपण कोन करिवे दैट इज बिग स्क्रीन रे देखिया पई चाहंती और स्लाइड शो करिया पई चाहंती सेति शिफ्ट सहित F5 को प्रेस करिवे ऑप्शन ए हबो राइट आंसर शिफ्ट सहित F5 हिजो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 द OSI मॉडल contains a total of how many layers जाको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन कहा जाय ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होचे को नेटवर्क मॉडल राइट यहा को रेफरेंस मॉडल भाबरे यूज करा जाय बट वर्किंग मॉडल होचे आपनकर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल रो मॉडल TCP एंड IP मॉडल एथरे चारोटी लेयर रहछि बट OSI मॉडल रे सातोटी लेयर रहछि ऑप्शन बी हिज राइट आंसर एथरे केतोटी लेयर रहछि सातोटी लेयर रहछि नेक्स्ट S is a web search engine owned and operated by Microsoft. It means Microsoft द्वारा provide करा जाउथवा गोटे सर्च इंजिन होची Bing. Bing is your right answer. Like Google द्वारा provide करा जाउची कोन that is Google. सेमति Microsoft company गोटे सर्च इंजिन provide करची that is Bing. Next question number 30. This data type is used to store fixed length character string in SQL. It means structured query language रे. तो सेटा क्यों डाटा टाइप गोटे कैरेक्टर विषय कह जाउची तो गोटे कैरेक्टर रो डाटा टाइप हबो ऑप्शन डी CHAR डाटा टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ वैलिड इंटरनेट वेबसाइट URL कोंतु निम्नलिखित मध्यरु कोनटा एक वैलिड इंटरनेट रो वेबसाइट रो गोटे URL मींस वेब रो एड्रेस गोटे वैलिड वेब एड्रेस अटे जाको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मध्यरु कह जाय कोन हिजबो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर www वर्ल्ड वाइड वेब देन आपनकर gmail.com आसी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 ट्राई करंतु the objects of the visited websites are stored in the local disk in dash folder it means प्रश्न कहूची आपण कोनसी वेबसाइट को विजिट करछंती कोनसे को ब्राउजर रे ठीक अछि तो सेटा आपण घर जदी लोकल डिस्क रे स्टोर होची जहा भी डाटाटा स्टोर होची तो सेटा कोन कहजिवो सेटा कहजिवो इट मींस ता लोकल डिस्क रो केउ फोल्डर रे स्टोर होची ता कैसे फोल्डर रे स्टोर होची दैट इज गोटे टेम्पररी फाइल्स जहा आपण कैसे फोल्डर रे स्टोर होय माने रखंतु नेक्स्ट व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ UPS रो फुल फॉर्म कोन हबो UPS रो फुल फॉर्म कोन है UPS गोटे बैटरी भाबरे काम करूची आपन को कंप्यूटर रे दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होची UPS रो फुल फॉर्म नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम्स इज यूज्ड बाय यूनिवर्सिटी वेबसाइट माने कोन गोटे एजुकेशनल वेबसाइट सेति भाई .edu रो कोन .edu रो डोमेन नेम्स को यूज करा जाय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 What is the maximum number of sheets that can be added to an Excel workbook? Options अनुसार कहंतु. What is the maximum number of sheets that can be added to an Excel workbook? 255. Option B have a right answer. Next, which key in Windows Explorer allow you to view property? अपना property को केमिति चेक करि परिबे? Windows Explorer रो property को चेक करि परिबे सेति पई alt सहित enter को प्रेस करि परिबे. Next question number 37. What does smishing stands for कोन हबो कोंतु smishing माने कोन smishing माने SMS phishing को smishing कुआ जाय ऑप्शन सी ठीक अछि phishing हबो माने आपनकर जो इंफॉर्मेशन ता दैट इज कोन करि जे ताको आपनकर चोरी और हैक जाउ कुआ जाय ठीक अछि हैक करा जाय दैट इज phishing आपनकर लॉगिन आईडी पासवर्ड इंफॉर्मेशन ए सब लागो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 to process large transactions that can run without end user interaction you can use ओके एंड यूजर रो कोनसे इंटरेक्शन रहबो नाही तो सेटा कोन कहजिवो बैच प्रोसेसिंग विदाउट एनी इंटरप्शन रे दैट इज कामटी हबो बैच प्रोसेसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच लेयर इन OSI आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ द OSI मॉडल दैट इज कोन आपनकर सॉफ्टवेयर रो लेयर रे आसी तीनटा देन आपनकर हार्डवेयर रो लेयर रे आसी गला तीनटा तो मिडिल लेयर टा रहला दैट इज हार्ट ऑफ द OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रो हार्ट को जे ट्रांसपोर्ट लेयर आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 ट्राई करंतु इन एक्सेल dash shows the quick count sum
average of the selected range of cells without entering any formula. Okay, in Excel रे dash show ही परियो the quick count sum ही गला average ही गला of the selected range of cell without entering any formula. which option है जो सेठी आपण status bar को कोन करि परिबे Excel रे status bar रे कोन हबो show हबो the quick count sum आपण average of the selected range ही गला without entering any formula.